आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एकदम टाइम से आए। तो आप तो अपने लिए एक बार तालियां बजाइए। Thank you. So we will welcome Prabhu ji. His name is His grace Brihad Mridanga Prabhu. Hari Bol. You chant Hare Krishna Mahamantra for Prabhu ji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare अभी प्रभु जी ने अपना लीडरशिप डेवलपमेंट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो वेलकम प्रभु जी एंड प्रभु के साथ कुछ डिवोटीज और भी आए हैं, तो हम उनका हरे कृष्णा से वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे Bihari Jaya Radha Madhava Kunja 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 Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari
Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Bhagiri Varadhari Jaya Gopi Janavala Bhagiri Varadhari Yashoda Nandana Bhaja Janaranjana Yashoda Nandana Bhaja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Bolo Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Hare Krishna. I'm honored to be here with all of you tonight. Thank you for coming. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आने में आज शाम को. I have been so transformed by this practice of bhakti yoga over the course of the last 5 years. Actually, I received Bhagavad Gita 2016. Since then, my life has been amazingly transformed.
तो प्रभु जी बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में 5 साल पहले प्रभु जी को फर्स्ट टाइम भगवद गीता प्राप्त हुई थी और उसके बाद से प्रभु जी की जीवन जो है पूरी तरीके से बदल गई है भगवद गीता के माध्यम से। So this is actually a very short time. Many of you probably know more about Gita than I do. तो प्रभु जी विनम्रतापूर्वक बता रहे हैं कि मुझे तो बहुत ही कम समय पहले ही भगवद गीता मिली है, लेकिन आप तो भगवद गीता के प्रदेश से हैं, इसलिए आपको मुझसे ज्यादा पता होगा भगवद गीता के बारे में। This is your culture, your heritage, your wisdom, and I am so blessed that I came in contact with it, and I will try to share a little that I know. प्रभु जी बता रहे हैं कि ये आप ही का कल्चर है, आपकी ये संस्कृति है जो कि मुझे कृपा पूर्वक जो है प्राप्त हुई है और आज मैं उसी के विषय में कुछ थोड़ा जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ। But the amazing thing about Bhagavad Gita is that even if you know this much, your life becomes completely transformed. भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर आप इस पूरे भगवद गीता में से अगर एक अंश मात्र भी अगर आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। And my hope is that by showing that even somebody like myself who didn't know anything about Bhagavad Gita until I was 22 years old, if I can speak something about Bhagavad Gita, why can't all of you? मुझे बता रहे हैं कि हालांकि मुझे जब मैं 22 साल का था तब ये भगवद गीता प्राप्त हुई थी और आज 5 साल के बाद मैं कुछ बोलने के कुछ अगर योग्य बना भी हूँ तो फिर आप क्यों नहीं जो है इस भगवद गीता का प्रचार कर सकते जबकि आप इस भारत प्रदेश में जन्म लिए हैं। You're all very fortunate to be born in Bharatvarsha and to know about Bhagavad Gita from the beginning of your life. तो इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। And if you hear anything that inspires you, that I share, anything that helps you in your life, then that is coming from His Divine Grace, Srila Prabhupada, and my spiritual master. So please know that Srila Prabhupada, his brilliance is coming through, if anything wonderful you hear tonight. और अगर कुछ मेरी बातों से अगर आपके जीवन में कुछ भी अगर परिवर्तन आता है, कुछ आपको प्रेरणा मिलती है, तो ये वास्तव में केवल इस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा आप माननी चाहिए। Srila Prabhupada ki jai. So I'll offer some pranams. You can chant with me if you would like. Om Agyanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tham Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare. So tonight is the first of 5 sessions on the topics, the major topics of Srimad Bhagavad Gita. तो भगवद गीता के प्रमुख 5 विषयों के ऊपर जो चर्चा हम आरंभ करने जा रहे हैं, आज उसका प्रथम जो है, आज उसका सत्र है। Tonight we will discuss the concept of Ishwara. तो आज हम 5 सत्रों में से जो पहला सत्र है, उसका जो आज शीर्षक है वो है ईश्वर, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। Ishwara means God. ईश्वर मतलब भगवान। And as God is unlimited, it is not possible in a short 30-minute, 45-minute session to explain even one drop. और क्योंकि ईश्वर जो है वो अनंत है, तो इसीलिए 30-40 मिनट में भगवान ईश्वर के बारे में बताना ये असंभव है वास्तव में। So we will just get a little glimpse. तो इसलिए आज हम कुछ छोटी सी झलकी से ही अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। And we encourage everybody here to take Srimad Bhagavad Gita as it is, if you have not already, and read it every day in your own time. और यदि आपके पास अगर भगवद गीता ना हो, तो प्रभु जी अनुग्रह करते हैं कि आप कृपा करके भगवद गीता लीजिए और उसको दिन प्रतिदिन उसको जो है उसका अध्ययन कीजिए। If you read Bhagavad Gita every day, think about it, apply it in your life, that's really how you will understand Bhagavad Gita. This short session is just like an appetizer. वास्तव में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो तो बहुत क्षण मात्र ही है भगवद गीता के बारे में, लेकिन यदि आप भगवद गीता को प्रतिदिन पढ़ते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो वास्तव में आप भगवद गीता के असली लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। Haribo. So Srila Prabhupada, in the introduction of Bhagavad Gita, says, from Bhagavad Gita, we must learn what God is. प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन यानी जो भूमिका है भगवद गीता में, उसमें बताते हैं कि भगवद गीता से हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कौन है। So this is an imperative. He's saying we must. तो इसीलिए ये अनिवार्य है कि हमें पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, और वास्तव में जो शब्द लिखा है उसमें बताया कि भगवान क्या है, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। So why must we learn what God is? Why must we learn what God is? क्यों भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, क्यों? Many reasons, but 3 that I can see are for a more meaningful life, a more satisfying life, and as Srila Prabhupada says, for a sane human life. तो बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हम भगवान की खोज करते हैं। तो प्रमुख रूप से 3 कारण के बारे में प्रभु जी बता रहे हैं कि पहला ये है कि बड़ी ही मीनिंगफुल लाइफ हो जाती है, यानी जीवन का एक मतलब, एक दिशा मिलती है। दूसरा कारण है कि जीवन में संतुष्टि प्राप्त होती है जिसकी हमें खोज है, और तीसरा कारण ये है कि जीवन में जो है सभ्यता आती है, हम सेन बनते हैं, वास्तव में मनुष्य बनते हैं। Without God in our life, life has no meaning. भगवान अगर हमारे जीवन में ना हो तो उस जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। Many of you are students, and this is very good. We need to study, we need to have a stable material situation in life. But there is more to life than simply studying, working, retiring, and dying. तो आप सब यहाँ पर विद्यार्थी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी जरूरी है जीवन को व्यापन करने के लिए, लेकिन केवल जीवन व्यापन करना या जीवन में समृद्धि करना या फिर उसके उपरांत मर जाना, यही जीवन में इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के नहीं जीना चाहिए। जीवन किसी और बड़े लक्ष्य के लिए बना है। Because everything that we earn in our life, whatever money, home, family, whatever we have at the end of life will be gone. जो भी हम कमाते हैं जीवन भर में, वो सब जीवन के पर्यांत पे समाप्त हो जाता है, वो शेष हो जाता है। So we're not here to say don't have a family, don't go to school, don't work, but we need to understand how to have a deeply meaningful life with God at the center.
तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परिवार को छोड़ दीजिए, पढ़ाई को छोड़ दीजिए, अपने कारोबार को छोड़ दीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये सब लेते हुए कैसे कृष्ण को आप सेंटर में यानी बीच में केंद्र में बनाए रख सकते हैं। And also, to have satisfaction in life, we must have a connection with God. और केवल भगवान को केंद्र में रखने से जो है हम हमारे जीवन में एक संतुष्टि का अनुभव भी हम कर पाएंगे। Because any material pleasure we can get is temporary. क्योंकि भौतिक संसार के जितने भी संसाधन हैं जिसको हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं वो अनित्य है, वो संतुष्ट नहीं कर सकती हमारे। Krishna explains in Gita that one who's wise doesn't take pleasure in things that have a beginning and an end. तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जानता है कि इन अनित्य साधनों में जो है सुख प्राप्त नहीं हो सकता। We need happiness in something eternal. और हमें जो खोज है वो है नित्य सुख, नित्य आनंद, उसकी हमें खोज है। And also, Srila Prabhupada explains that if we don't have an understanding of God, then we're not actually sane. और दूसरे रूप में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि यदि हम भगवान के बारे में नहीं जानते हैं तो वास्तव में हम सभ्य मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। Don't blame me if this is a strong statement. I'm repeating Srila Prabhupada's words. तो इसलिए ये सुनकर के आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में केवल प्रभुपाद जी के ही जो है दार्शनिकों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। He says, any reasonable person can understand that behind any wonderful thing, there is a controller. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे उसको संचालित करने वाला कोई व्यक्ति होता है। You see a car, and a child might be amazed to see that it's moving on its own, but an intelligent adult sees that there's a driver. तो जब एक बच्चा देखता है कि गाड़ी चल रही है तो वो बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि कैसे ये चार पहिए वाली गाड़ी अपने आप चल रही है। लेकिन वास्तव रूप में अगर कोई बड़ा व्यक्ति उस गाड़ी को देखता है तो वो समझ सकता है कि गाड़ी के पीछे एक चालक बैठा है जिसकी वजह से गाड़ी चल रही है। In the same way, we see the cosmos moving in such an organized, beautiful way, and people say there's no controller. So this is not sane. उसी प्रकार जब लोग देखते हैं कि इतना जो बड़ा भौतिक संसार है वो अपने आप चल रहा है तो लोग कहते हैं कि इसके पीछे कोई भी नियंत्रक नहीं है, कोई उसको चलाने वाला नहीं है। तो वास्तव में असभ्यता का प्रतीक है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे भी एक कंट्रोलर है। These are a few reasons why we should understand what God is. तो इसीलिए ये जो तीन कारण है, ये कुछ कारण मैंने बताए हैं जिसकी वजह से हमें भगवान की खोज करनी चाहिए। So in the time we have, I'd like to discuss how God is almighty and also all loving. तो आज जो हमारे पास समय बचा है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस प्रकार भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी, और साथ में भगवान जो है सबके सूरज है, जो सबको प्रेम देने वाले हैं, मतलब सब जीवात्माओं में सबसे सूरज है, सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं। So we will discuss who God is, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे भगवान कौन है, the three aspects of God, और भगवान की जो तीन दृष्टिकोण है उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे, and the loving qualities of God. और भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनका भी हम आज चर्चा करेंगे। And when we put these together, we will see that our life will be filled with light, be filled with happiness. और जब हम इन भगवान के विशेष चरित्र के बारे में आज जानेंगे तो इसके माध्यम से हमें जो है दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। So who is God? God is Bhagavan. तो भगवान, गॉड कौन है? गॉड Bhagavan is the Hindi word. So God is भगवान, मतलब भगवान ही गॉड है। So the definition of Bhagavan, according to Parashara Muni, the father of Srila Vyasadeva, तो भगवान का अर्थ जो है व्यासदेव जी के पिताजी पराशर मुनि ने बताया गया है, उसका मतलब is the person who has all of these six opulences completely. तो वो व्यक्ति जिसके अंदर छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से पाए जाते हैं उस व्यक्ति को भगवान कहलाया जा सकता है। So Bhagavan has all wealth, all strength, beauty, fame, knowledge, and detachment. तो भगवान वो व्यक्ति है जिनके पास पूर्ण रूप से धन, यश, ज्ञान, बल और वैराग्य है। So
when you find the person who has all of these opulences completely, unlimitedly, that person is Bhagavan. तो जब आप ऐसा व्यक्ति ढूंढ लोगे जिसके अंदर ये सारे ऐश्वर्य, छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से प्राप्त हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप भगवान कह सकते हैं। Srila Vyasadeva throughout Bhagavad Gita refers to Lord Krishna as Bhagavan. He begins the shloka, Shri Bhagavan Uvacha. तो व्यासदेव पूरे वैदिक ग्रंथों में भगवान को जब संबोधित करते हैं तो वहां पे हमेशा ये लिखते हैं कि श्री भगवान उवाच। So throughout India, people have many ideas of who is God. तो इसीलिए विशेष रूप से भारतवर्ष में कई प्रकार की जो है धारणाएं हैं कि भगवान किसको बोला जाए। There's practically a God on every street corner. वास्तव में हर शहर में हर गली में जो है एक भगवान आपको मिल जाएगा। New gods coming. और नए के नए जो भगवान है वो दिन पर दिन पैदा होते जा रहे हैं भारतवर्ष में। But no, this doesn't make sense. God is always God. God never becomes God. वास्तव में भगवान जो है हमेशा से ही भगवान रहते हैं, उनको भगवान बनने की या पैदा होने की जरूरत नहीं है। And an avatar always is predicted in the Shastra. और अगर कोई भगवान कहता भी है तो वास्तव में शास्त्र से प्रमाणित होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में बताया जाता है कि भगवान का अवतार कब कब होगा। And the Shastra declares very clearly who is Bhagavan. और शास्त्र बताया गया कि वास्तव में कौन व्यक्ति जो है भगवान कहलाने के लायक है। Srimad Bhagavatam says, Ete changsha kalapungsa Krishnas tu Bhagavan Swayam. तो श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि एते जाम से कलावंशा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। Lord Brahma says in Brahma Samhita 5.1, Ishwara Parama Krishna. और उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी बताते हैं भगवत संहिता में कि ईश्वर परम कृष्ण। And then Krishna himself. और कृष्ण भी भगवत गीता में बताता सर्वम प्रकट करते हैं। He says, I'm the source of everything. Material and spiritual worlds come from me. तो बताते हैं कि सारे भौतिक और आध्यात्मिक जगतों के कारणों के कारण मैं ही हूँ। And he says, Mayatatamidam sarvam. He says that all things rest on me as pearls are strung on a thread. There is no superior to me. और उसी प्रकार भगवान ये भी बताते हैं कि सारा संसार जो है मेरे ही आधार पर चलता है, जिस प्रकार मोतियां जो है धागे के आधार पर बंधी रहती हैं, उसी प्रकार ये जगत जो है मेरे आधार पर जो है टिका हुआ है। Mata parataram nanyat kinchir asti. अतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति। So Krishna declares himself very clearly in Bhagavad Gita that he is the supreme source of everything. He is Swayam Bhagavan. तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बड़े ही साफ रूप से ये डिक्लेयर कर रहे हैं, समझाने की भगवान अगर कोई है तो वो मैं ही हूँ। And he explains the position also of demigods and their worshippers in Bhagavad Gita. और उसी प्रकार जितने भी देवता हैं उनके बारे में भी व्याख्या भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में की है। So Shiva, Durga, Ganesh, and so on, these demigods are servants of Krishna. They are like Krishna is the prime minister and they are his cabinet members who are serving him. तो जितने भी देवी देवता हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, ये सब भगवान के ही सेवक हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री होता है और उसके अंदर और बहुत सारे मंत्रीगण होते हैं जो प्रधानमंत्री की सेवा में नियुक्त रहते हैं, उसी प्रकार देवता भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं। And he explains that the power that they have is actually coming from him. और जितनी भी पावर, जितनी भी शक्ति उन देवताओं में है, वो सारी शक्ति भगवान कृष्ण से ही आती है। And the faith actually of the worshipper of the demigods is inspired by Krishna. और वास्तव में जो श्रद्धा एक देवता के उपासक के अंदर हृदय में आती है किसी विशेष देवता के प्रति, वो श्रद्धा भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। So this is Krishna's opulence of detachment. तो वास्तव में ये भगवान कृष्ण का वैराग्य है। He is not concerned to have everybody glorify him. भगवान ये नहीं चाहते कि सब लोग मेरी ही पूजा करें। He gives us the free will to choose. भगवान जो है स्वतंत्रता देते हैं कि आप चुन सकते हो कि आप किसकी पूजा करना चाहते हो, किसमें श्रद्धा बनाना चाहते हो। So, continuing on the definition of Bhagavan in Bhagavad Gita, Krishna explains in what way he acts as God. अब जब भगवान निर्धारित हो चुके हैं कि कृष्ण ही भगवान है,
अब भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि भगवान होने के नाते वो किन किन कार्यों में संलग्न होते हैं। He says that he is Bhoktaram Yagya Tapasam, which means that he is the supreme enjoyer. तो भगवान बताते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, यानी वो सबके भोक्ता है, भोग करने वाले हैं। If you think about it, we can enjoy only a little bit. तो अगर वास्तव में देखें तो हम कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही जो है भोग कर सकते हैं, हम स्वतंत्र रूप से अनंत रूप से भोग नहीं कर सकते। Even if you're extremely wealthy, you can really only eat the same few chapatis that the very poor person can eat. तो यदि आपके पास बहुत सारा धन भी आ जाए तो भी आप शाम को या सुबह जो है उतनी ही चपाती खाओगे जितना आप पहले खा रहे थे। If you're very wealthy, maybe you have a very comfortable, soft mattress, but you're still sleeping just like the dog sleeping in the street. तो यदि आप बहुत सुंदर अगर बिस्तर भी आ जाए तो भी आप उसी प्रकार सोते हैं जैसे आप पहले सोते थे। नींद आ जाने के बाद पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। So how much can we really enjoy? तो वास्तव में हम कितना भोग सकते हैं? Can we really say we can enjoy unlimitedly? क्या हम कह सकते हैं कि हम अनंत रूप से भोग सकते हैं? But Krishna, he can enjoy unlimitedly. लेकिन कृष्ण जो है अनंत रूप से भोग सकते हैं। For example, he married 16,108 queens in Dwarka. जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने दर्शाया कि वो 16,108 रानियों के साथ एक साथ विवाह कर सकते थे। And just to maintain one wife is very difficult. और हम सब जानते हैं कि एक पत्नी को संभालना कितना मुश्किल होता है। What to speak of 16,000? और 16,000 की तो बात ही छोड़ो। What to speak of the millions of children that they all had? और वो जितने संतानें उत्पन्न हुई थी, कई लाख करोड़, उनको भरण पोषण करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कैसे किया होगा भगवान। So we can't enjoy like that. तो इसीलिए हम भगवान के रूप में जो है भोग नहीं सकते। Krishna also says that he is Sarva Loka Maheshwara. He is the supreme controller. साथ में भगवान ये भी बोलते हैं कि भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, यानी सारे लोगों के नियंता, कंट्रोलर भगवान है। So think about how much our control is limited. लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोल या हमारी नियंता, मैनेजमेंट कितना सीमित है। If you have to use the bathroom and we lock the doors, how much control do you really have? तो Either way, if you are locked in the auditorium here and you have to use the bathroom, can you really say that you are in control of your bladder? तो ये कह रहे हैं कि यदि आपको बहुत जोर से बाथरूम लगा हो और यहाँ पे ऑडिटोरियम के दरवाजे में कुंडी लगा दी जाए तो आप कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हो? कितने बड़े कंट्रोलर हैं आप? So we are very, very tiny controller. तो हम वास्तव में कंट्रोल करने की शक्ति, हम अपने पेट की कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया क्या कंट्रोल करेगी? But we are not a supreme controller. तो वास्तव में हम कंट्रोल जो है सुप्रीम कंट्रोलर तो हो ही नहीं सकते। Simply getting the right amount of sleep, eating the right amount, taking care of this one body, how much effort does that take? सिर्फ अपने शरीर को संभालने के लिए कितना सारा एनर्जी हमको देना पड़ता है। On the other hand, Krishna is maintaining unlimited universes, all with unlimited planets, all with unlimited living beings on each planet. और दूसरी तरफ देखें तो भगवान कृष्ण जो है अनंत ब्रह्मांडों को, जिसके अंदर अनंत रूप से जीवात्माएं रहती हैं, उन सबको जो है धारण पोषण पालन कर रहे हैं। And all of this he's actually doing through his expansion as Vishnu. So Krishna personally is not even doing it. और वास्तव में भगवान कृष्ण खुद ये कार्य नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अपने एक्सपेंशन यानी अपने अंश विष्णु के माध्यम से जो है ये सारे कार्य करते हैं। The best manager is the one who can delegate. तो इसीलिए ये हम जानते हैं एक कॉर्पोरेट की फिलॉसफी होती है कि जो बेस्ट मैनेजर है वो डेलीगेट करता है, दूसरों को काम देता है, खुद फ्री रहता है। And he's free to enjoy. तो वही भगवान करते हैं, भगवान खुद स्वतंत्र रहते हैं और दूसरों से काम करवाते हैं। So Krishna is eternally having his eternal enjoying pastimes in the spiritual world. तो इस प्रकार भगवान स्वतंत्र रह करके केवल अपने लोक में जो है वो लीलाएं कर रहे हैं। And he has Lord Vishnu and his demigod supervisors take care of the material world. और उनके विस्तार हैं भगवान विष्णु और अनेक देवी देवता जो कि इस पूरे यूनिवर्स इस ब्रह्मांडों का जो है मैनेजमेंट करते हैं। So Krishna is the best manager. इस प्रकार भगवान विष्णु सबसे बेस्ट मैनेजर है। So if you want to become a good businessman, you can take some lesson from Krishna. इसलिए यदि आप में से कोई अगर बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं
तो आप सीखे जाए हैं भगवान कृष्ण को जान करके आप बेस्ट मैनेजर बन सकते हैं। So Krishna is also Suhridam Sarvabhutanam. He's the best friend of all living beings. और साथ ही भगवान बोलते हैं कि भगवान सूर्यदम सर्वभूतानाम है, यानी सभी लोगों के सबसे परम मित्र भगवान है। Again, consider how many friendships can we really maintain? और अगर हम अपनी बात करें तो हम कितने दोस्त बना सकते हैं? And even of those friends you have, how much can you really give them exactly what they want? और जो दोस्त हमारे पास हैं भी, उनके साथ में हम कितनी देर या कितने मात्रा में हम आदान प्रदान कर पाते हैं? Do you really know all of them deeply? क्या आप पूरी तरीके से अपने दोस्त, जो भी आपके दोस्त हैं, क्या आप पूरी तरीके से अपने दोस्तों के बारे में जानते हैं? Maybe a few people. हो सकता है बहुत ही उन दोस्तों में से भी बहुत कम लोग हों जिनके बारे में आप पूरी तरीके से या अधिक मात्रा में जान सकते हैं। But Krishna knows every living being perfectly, and he can reciprocate with them exactly as they desire. लेकिन भगवान कृष्ण की अगर शक्ति को देखें तो भगवान कृष्ण सारे जीवों के साथ, पहले तो सारे जीवों को जानते हैं और वो शक्ति रखते हैं कि सारे जीवों के साथ पूरी मात्रा में वो आदान प्रदान करना, वो शक्ति भगवान में है। Krishna knows our past, our present, our future of not just this life, but every life. भगवान इस हद तक जानते हैं कि भगवान हमारे वर्तमान, पूर्व और भविष्य सबको ही जान, मतलब एक जीवात्मा के बारे में पूरा हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानता है। So Krishna knows us better than anybody. He cares about us more than anybody, and he's actually capable to give us what we are longing for. तो इस प्रकार भगवान कृष्ण सारी शक्तियों को रखते हैं, हमको जानने की क्षमता रखते हैं, हमको आनंद प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, हमसे दोस्ती करने की क्षमता भगवान कृष्ण में है। So if we know this, Krishna says, Yatvamam Shantim Richati. We will be peaceful. तो यदि हम भगवान के बारे में इन तीन गुणों को जान लेते हैं तो इस श्लोक के आधार पर बताया गया कि हम शांति को प्राप्त होंगे, यानी हमें पीसफुल शांति प्राप्त होगी। So consider these 3 points. Krishna is the supreme enjoyer, supreme controller, and the best friend of everybody. तो इसलिए आपको विचार करना चाहिए इन तीन बातों में कि भगवान कृष्ण सबके भोक्ता हैं और सभी लोगों के महेश्वर हैं और साथ ही जो है सभी के सूर्य मित्र भी। Now, another important aspect of Ishwara, Bhagavan, is that there are 3 aspects. और अब हम भगवान के तीन दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। So, the aspect of Brahman is the all-pervading feature. तो तीन दृष्टिकोण यानी तीन तरीके भगवान को देखने के, उनमें से पहला है भ्रमण। And this Brahman is the Sat feature of the Absolute. तो ये जो भ्रमण है ये भगवान का सत जो गुण है, सत उसको दर्शाता है। And realizing Brahman, then we are at the first level of understanding God. तो यदि हम भ्रमण दृष्टि को प्राप्त कर पाते हैं इस जीवन काल में तो वास्तव में हम पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं भगवान कृष्ण को साक्षात्कार करने के रास्ते पे। This is what the impersonalists are seeking after, is to merge into this Brahman. तो ये जितने भी मायावादी योगी हैं वो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसमें वो भगवान को जो है अनंत रोशनी के माध्यम से वो भगवान को परसीव करते हैं और फिर उनकी इच्छा होती है कि उस रोशनी में लीन हो जाए, समाहित हो जाए। So if people talk about becoming God, it's possible to enter into this Brahman, which is the light coming from the Supreme. तो ऐसे लोग इस विचारधारा के होते हैं कि हम एक दिन भगवान में लीन हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे। तो इसी विचारधारा के लोग जो हैं इस भ्रमण साक्षात्कार को प्राप्त करके भ्रमण में लीन होने की इच्छा रखते हैं। But we can never become Bhagavan. लेकिन वास्तव में सच तो ये है कि हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। And even though we can enter into this Brahman or Brahma Jyoti, we will not be satisfied. तो इस दृष्टिकोण से यदि अगर हम ब्रह्मन में लीन भी हो जाते हैं, भगवान का जो ब्रह्मन वाला एस्पेक्ट है उसमें लीन हो जाते हैं, तो भी हम वास्तव में अपनी जो वैष्णव नेचर है उसको अभी भी मेंटेन करते हैं, भगवान हम नहीं बन पाते। Srila Prabhupada calls this spiritual suicide. और इस लीन होने को प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सुसाइड के बराबर है। Because we lose our identity. क्योंकि हम वहां पर जाकर के अपने
अस्तित्व को खो देते हैं। But this is a feature of God. लेकिन ये भी एक भगवान का दृष्टिकोण है, यानी देखने का एक नजरिया है। The next step up is Paramatma. और इससे ऊपर का जो दृष्टिकोण है, यानी इससे बेटर जो साक्षात्कार है, वो है परमात्मा का। Paramatma is Krishna seated in the heart of every living being. तो परमात्मा भगवान का वो विस्तार है जहाँ पे भगवान जो है परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। And this is the Chit feature of the Absolute. ये भगवान का चित गुण है। And this is what yogis are sitting and meditating on, is the form of Paramatma in the heart. तो ये जितने भी योगीज हैं वो इस धरातल में गिने जाते हैं, जो कि अपने हृदय में बैठे भगवान का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। If we talk about intuition or inspiration, this is coming from Paramatma. और वास्तव में जो हमारे अंदर इंस्पिरेशन आता है या फिर कुछ करने की अगर इच्छा जागृत होती है, डायरेक्शन मिलता है, तो वास्तव में परमात्मा के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। But also we won't be fully satisfied by just realizing this Paramatma form. लेकिन यदि हम भगवान के इस विस्तार का साक्षात्कार कर भी लें, तो भी हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। Why? Because the soul is seeking Ananda. क्यों? क्योंकि आत्मा जो है आनंद की खोज में है। So only by realizing Bhagavan can we experience Ananda. लेकिन वास्तव में जो भगवान का तीसरा दृष्टिकोण है, भगवान का जो दृष्टिकोण है, केवल उसी को प्राप्त करने पे आनंद की अनुभूति जो है पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है। Just like eating gulab jamun. जैसे कि गुलाब जामुन आपने खाया होगा। If you just smell a gulab jamun, you're not totally satisfied. तो यदि आपको बोला जाए कि गुलाब जामुन सामने है, केवल इसको सूंघ के इसका मजा लीजिए, आप मजा नहीं ले पाएंगे। You can go and you can see the gulab jamun after smelling it. You smell the gulab jamun being cooked and you can go to the kitchen and see the gulab jamun, but still you won't be satisfied. तो सूंघने से भी आप उसका पूरा मजा नहीं ले सकते, और सूंघने के बाद जब आप उसको देख भी लें, केवल देखने मात्र से भी आप उसका पूरा मजा नहीं ले सकते, हालांकि गुलाब जामुन को ही देख रहे हैं। You will only be satisfied when you eat the sweet gulab jamun. लेकिन गुलाब जामुन का मजा तो तभी आता है जब गुलाब जामुन मुंह के अंदर उतरता है। Brahman, Paramatma, Bhagavan. उसी प्रकार एक ही व्यक्ति को तीन दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण है, परमात्मा है और भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। So the smell, the form are parts of the gulab jamun, but they are not the thing we're really looking for. तो जिस प्रकार गुलाब जामुन का एक रूप भी है, गुलाब जामुन की एक सुगंध भी है, लेकिन वास्तव में उसका टेस्ट ही है, गुलाब जामुन का टेस्ट ही है जो कि हमको संतुष्ट करता है। उसी प्रकार से भगवान के अलग अलग रूप हैं, परमात्मा, भगवान और ब्रह्मन। तो ये तीन विस्तारों में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन वास्तव में संतुष्ट तभी होता है व्यक्ति जब भगवान जो उसका साक्षात्कार हो। So if you want complete satisfaction in life, you must seek Bhagavan. तो यदि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं, तो आपको भगवान का जो भगवान स्वरूप है उसको आपको साक्षात्कार करना होगा। So now, after discussing a few aspects of the almighty nature of Bhagavan, now we will hear a little about the qualities of Bhagavan, the sweetness of Bhagavan. तो अब हमने भगवान की चर्चा कर ली है, अनेक माध्यमों से हमने करी है। अब हम भगवान के कुछ मधुर गुण और लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। Krishna is very grateful. तो भगवान का एक बहुत प्रथम गुण है कि भगवान बहुत ही कृतज्ञ हैं। He says that if you simply offer with love and devotion, even a leaf, a flower, a fruit, or water, he will accept it. भगवान बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल पत्ता, फूल, पानी या फिर चार चीजें, ये अगर कोई प्रेम से प्रदान भी करता है, तो भगवान उसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हो जाते हैं। Patram pushpam phalam toyam. He says, just these four simple things, if you offer me with love, with bhakti, then I will accept it. यदि कोई व्यक्ति ये चार चीज, पत्रम, पत्ता, पुष्पम, फूल, फलम, फल और तोयम यानी पानी, ये चार चीजें भी अगर कोई बहुत सिंपली
ये अक्वायर की जा सकती है, लेकिन ये 4 चीजों से भी अगर कोई प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करता है तो भगवान उसकी इस सिंपल ऑफरिंग से भी प्रसन्न हो जाते हैं। So any little thing we do for Krishna, he is so grateful for. इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई थोड़ा सा भी अल्प सेवा भगवान के लिए कर देता है तो भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। Even just thinking about doing some service for Krishna, he will be so pleased and he will reward you for. तो केवल करने की बात छोड़िए, केवल अगर आप मन में सोच भी लेते हैं कि मैं ये भगवान के लिए करना चाहता हूँ उनकी संतुष्टि के लिए, केवल ये देख करके भी भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं। So what to speak of actually doing that service? वास्तव में उसको करने के बाद भगवान कितने ही प्रसन्न हो जाते हैं। And whatever service we do is eternal. और जो भी हम सेवा करते हैं वो शाश्वत रूप से भगवान उसको शाश्वत रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। He says that even a little bit of service that we do is not only everlasting, but also saves us from the most dangerous type of fear. और भगवद गीता में बताया कि ऐसा अल्प सेवा भी ये शाश्वत रूप से भी रहता है, और साथ ही साथ ये अल्प सेवा, छोटी सी सेवा हमको गहरे से गहरे डेंजर से भी निकाल सकता है। Of course, we can't cheat Krishna. If we have a great potential to give and we only give a little bit, then we are deceiving ourselves and deceiving Krishna. तो हम जो है भगवान को चीटिंग कर सकते हैं इस माध्यम से कि हमारे पास है बहुत सारा, लेकिन भगवान को कुछ ही देंगे। जैसे है बहुत करोड़ रुपए बट दान पेटी में केवल 2 सिक्के डालेंगे, तो इस प्रकार भगवान को चीट कर सकते हैं, लेकिन भगवान हृदय में पहले सब कुछ देखते हैं। So just like Lord Ram, when he was constructing the bridge to Lanka, there was the little spider trying to help. Hanuman was bringing huge boulders. Lord Ram was equally pleased with both. तो जिस प्रकार भगवान राम की लीला में हम देखते हैं कि हनुमान जी भी जो है बड़े बड़े पत्थर फेंक करके पुल बना रहे थे, लेकिन साथ में छोटी गिलहरी भी थी जो कि अपने अनुपात में जो है पूरा प्रयास कर रही थी। तो भगवान राम दोनों के ही प्रयास से खूब संतुष्ट थे, क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार वो दोनों ही अपने पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे भगवान राम को संतुष्ट करने के लिए। So different potentials, different abilities, but Lord Ram was pleased with the offering. तो इसलिए भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपको कितनी योग्यता दी है, भगवान ये देखते हैं कि जितनी भी योग्यता दी है उसका कितना प्रतिशत आप इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में। और यदि आप पूरा पूरा जो है योग्यता को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। There's also the story of Sudama Brahman in Srimad Bhagavatam. सुदामा ब्राह्मण की भी कहानी आप भागवत में पढ़ते हैं। Sudama Brahman just brought a little offering of chipped rice to Lord Krishna. सुदामा ब्राह्मण एक छोटा सा चूड़ा जो है भगवान कृष्ण के लिए लेके आए थे। And he, although offering something very small, Krishna rewarded him with unimaginable opulence. तो हालांकि सुदामा ब्राह्मण का जो गिफ्ट था वो बहुत ही छोटा था, इनसिग्निफिकेंट था, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने कृतज्ञ होकर के सुदामा ब्राह्मण को इतना बड़ा महल दे दिया। And Krishna ate that chipped rice as if it was the sweetest nectar in all of the universe. और भगवान कृष्ण ने उस चूड़ा का ऐसे आस्वादन किया जैसे ब्रह्मांड में कोई भी इतनी स्वादिष्ट वस्तु जो है भगवान को अभी तक अर्पित नहीं की हो। Because Krishna tastes the bhakti. क्योंकि भगवान कृष्ण वास्तव में स्वाद या उस पदार्थ को नहीं देखते हैं, भगवान उसके अंदर भक्ति को देखते हैं। And Krishna's queen Rukmini was saying, "Save some for me." और कोई जो रुक्मिणी है वो भगवान में कह रही थी कि अब आप और मत खाइए, कुछ हमारे लिए भी छोड़िए। So Krishna is very grateful. So why should we not do a little service for him? तो इसीलिए कृष्ण बहुत ही कृतज्ञ हैं, इसीलिए हम क्यों नहीं भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाए। And we will be imperfect. We may make mistakes in our service. और हमारी सेवा में जो है हो सकता है पूर्णता ना हो, हमारे में सेवा में गलतियां भी हो सकती हैं। Krishna says that even if you commit the most abominable action, you are still to be considered a sadhu if you are properly situated in your determination. लेकिन भगवान कृष्ण कितनी बड़ी छूट देते हैं कि यदि आप सेवा के दौरान बहुत कुछ जघन्य अपराध भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप भक्ति में बनाए रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी साधु मानना चाहिए। And not only that, he says that he quickly becomes righteous and attains lasting peace. और क्योंकि गलती करने के बाद भी उस व्यक्ति ने भक्ति नहीं छोड़ी है,
तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि थोड़े ही समय में वो जो है अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और दोबारा अपने साधु की स्थिति पे आ जाएगा। So we don't have to do something amazing for Krishna. We don't have to be a very huge personality. We don't have to. We may get blocked from starting if we think we need to do something huge for Krishna. तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कृष्ण के बहुत ही कैपेसिटी के भी बाहर जाकर के बहुत बड़ा काम करना है, उसी से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो वास्तव में ये बात सच नहीं है। So we do our best to our capacity, and Krishna is so grateful. And whatever mistakes we make, he overlooks them if we are just sincere. तो इसीलिए हमारी जितनी भी योग्यता, जितनी भी क्षमता भगवान ने हमें दी है, अगर उसी का ही पूरा प्रयोग करके हम अपना बेस्ट दें, अपना पूरा पूर्ण रूप से प्रयास करें, भगवान उसी से ही संतुष्ट हैं। Krishna is also very kind and understanding. तो इसी प्रकार भगवान बहुत ही काइंड है, दयालु है। So he knows that we are like children. भगवान जानते हैं कि हम भगवान के संतान समान हैं। We won't be perfect right from the beginning. और क्योंकि संतान गलती करता है, उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि हम भक्त जो है गलतियां करते हैं। In the 12th chapter of the Gita, he says that the best thing is to think of me all the time. 12वें अध्याय में गीता में भगवान बोलते हैं कि सबसे उन्नत तो यही होगा कि आप 24 घंटे मेरा स्मरण करें। But if you can't do that, he says, then just practice the rules of bhakti yoga. लेकिन यदि आप नहीं कर पाते तो केवल इन भक्ति का नियमों का पालन करें। So you can chant japa every day, you can come to the temple, you can come for a morning program like this. तो नियमों का मतलब जपा करें आप, और सुबह-सुबह जो प्रातःकालीन कार्यक्रम होता है मंदिर में, उसमें आप भाग लें। तो इस प्रकार If you can do this, it's very good. यदि आप नियमों का भी पालन करते हैं तो भी अच्छा है। But for some reason, if you can't, Krishna is understanding. और यदि आप ये भी नहीं कर पाते तो भी भगवान कृष्ण आपके लिए एक और विकल्प रखे हैं। He says, just try to work for me. कि आप केवल मेरे लिए कार्य करो, कर्म करो। So come offer some service at the temple. जब भी आप आना चाहो मंदिर आओ और कुछ सेवा देकर के जाओ। Give substantial donations to help the temple to grow. शारीरिक रूप से सेवा कर सकते हो, वो नहीं कर सकते तो धन रूप से आप दान भी कर सकते हो। So Krishna is very kind and understanding. इस प्रकार भगवान कृष्ण जानते हैं, समझते हैं। बच्चे से अगर वो नहीं होता तो उसको विकल्प देते हैं, फिर विकल्प देते हैं। तो इस प्रकार जिधर भी हम फिट होना चाहते हैं, भगवान कृष्ण एक हमारे लिए रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं। So these are a few aspects of the unlimited wonderful qualities of Lord Krishna. तो ये भगवान के अनंत गुणों में मैंने कुछ अंश रूप से व्याख्या करने का प्रयास किया। So now, to bring these two aspects together, the Almighty and the All-Loving, तो ये जो दो गुण हमने बताया कि भगवान कृष्ण सर्व शक्तिमान है और साथ ही सर्व दयालु है, इन दोनों को अगर एक साथ देखा जाए, so consider, what if your best friend was extremely wealthy, a billionaire? तो इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा यदि आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो एक करोड़पति हो। All of your problems could be solved immediately. तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं तुरंत समाप्त हो जाएंगी। At least your financial problems. At least your financial problems. At least आपका जो आर्थिक रूप से जो आपकी समस्या है वो तो आपको समाधान मिल जाएगा। So our situation is like this. तो यही हमारी अभी की स्थिति है। We have not only a best friend who's a billionaire, but we have a father who is unlimitedly wealthy, and we have an inheritance waiting for us. तो इस प्रकार भगवान एक हमारे उसी सूरज मित्र के समान है जो कि करोड़पति, तो क्या वो सारे लोगों के पति हैं, और साथ ही वो हमारे पिता के समान भी हैं, और वो हमारे लिए वो आध्यात्मिक जगत बना के रखे हैं जहाँ पे वो चाहते हैं हम सब लोग लौटें। So our problem is just that we've forgotten our relationship with this wonderful person.
पर समस्या ये है कि हम इस महान व्यक्ति के साथ अपना संबंध भूल बैठे हैं। And if we can remember this relationship with Krishna and begin to act in that relationship, we will see that actually all of our problems get solved. और यदि हम इसी भूली हुई अवस्था को ठीक कर लें, यानी भगवान के साथ हमारे रिश्ते को समझ लें, तो फिर हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल हो सकता है। Please raise your hand if you've had a problem that you feel is too difficult for you to solve recently. आप हाथ खड़ा कीजिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या आई हो जिसको आप खुद हल नहीं कर पा रहे। कभी कोई आपके जीवन में ऐसी समस्या है जो आप खुद से हल नहीं कर पा रहे हैं या कर पाए, हाथ खड़ा कीजिए। So, when we have a problem that we feel we can't solve, then if you remember this relationship and you act in that relationship, then you can actually see miracles happen in your life. तो यदि हम ऐसी अवस्था में कभी जाते हैं जहाँ ऐसी समस्या है जो हम खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब अगर आप इस संबंध को याद कर लें जो कि आपका भगवान के साथ है, शाश्वत संबंध, तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है और उस समस्या से आप कैसे उभर सकते हैं। ये चमत्कार आप जब आप संबंध को जानेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। Of course, Krishna won't solve our problems exactly the way we want. लेकिन भगवान भी बड़े चतुर हैं। भगवान आपकी प्रॉब्लम को उस ढंग से हल नहीं करेंगे जिस ढंग से आप चाहते हैं। He'll solve our problems exactly the way we need. वो उस ढंग से उस समस्या का हल करेंगे जिस ढंग से वास्तव में होना चाहिए। And if you look back at what has happened in your life as you've acted in your relationship with Krishna, you will see that actually it was organized perfectly. और हो सकता है आप उस समय के लिए असंतुष्ट रहें कि ये किस प्रकार की समाधान भगवान ने दी है, लेकिन जीवन काल में आगे बढ़कर के आप पाएंगे, पीछे मुड़कर के यदि आप देखेंगे कि भगवान ने वास्तव में जिस प्रकार का समाधान दिया था वो मेरे सबसे अच्छे हित को याद रखते हुए ही दिया था। So you may be doubting that this is true. तो इस प्रकार भगवान के अभी के समाधान से जो है आपको हो सकता है कि कुछ संदेह हो, ये किस प्रकार का समाधान है, कोई समाधान लग नहीं रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है। What if there is no God? What if there is no God? तो अगर आप जो है अभी पूरी श्रद्धा नहीं है भगवान में, तो फिर प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा मतलब सोच के देखिए अगर भगवान हो ही ना। So this is something we have to experiment. We have to practice and try. ओके, तो इस प्रकार हमें जो है ये प्रैक्टिस अपने जीवन में उतारना चाहिए कि किस प्रकार भगवान का संबंध हम कभी भी अपने जीवन की समस्याओं में ना भूलें। Srila Prabhupada describes Bhakti Yoga as a science. तो प्रभुपाद जी भक्ति योगा को एक विज्ञान के रूप में समझाते हैं। This is the last thing I'll share, and then I'll stop and ask for questions. So please begin to consider if you have something you'd like to ask. तो ये बात बताने के बाद मैं इस प्रश्न को रोक दूंगा और उसके बाद आपकी तरफ से अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। So a science means that you have a hypothesis, you have an experiment, you get results, and you make a conclusion. Okay, so साइंस का विज्ञान का मतलब है कि आपके पास Hypothesis? No, how to A theory? तो हाइपोथेसिस यानी कि हमारे पास एक आइडिया हो सकता है, फिर उसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कोई नतीजा निकलता है और इस प्रकार जो है LHS = RHS। Is a difficult service. So, Bhakti Yoga is a science. तो इस प्रकार भक्ति योग जो है वो विज्ञान है। You have to try it and see what results you get. तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और फिर जो नतीजे आए उससे आप समझ सकते हैं उसको। If you're not willing to try the experiment, then you're not a scientist. तो इसलिए यदि आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो वास्तव में उस साइंस को आप समझ नहीं पाएंगे And you will never be satisfied in life. और कभी संतुष्ट भी नहीं हो पाएंगे। So, what we're proposing here, what this International Society for Krishna Consciousness is proposing, is
try this science. तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये प्रचार कर रहा है कि आप केवल एक बार इसको प्रयोग करके अपने जीवन में उतार के देखिए। What do you have to lose anyway? और वास्तव में होने को है ही क्या? You see those who are practicing bhakti yoga very seriously, very happy. और आप ये देखेंगे कि जो लोग भक्ति योग का प्रयोग कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, वो वास्तव में बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं। So you practice properly and your life will be filled with joy. तो आप भी इस भक्ति योग के अभ्यास का प्रयोग कीजिए, आप अपने जीवन में उतार के देखिए और आप भी पाएंगे कि आप बहुत संतुष्ट, खुश हो जाएंगे। Bad habits fall away very fast. और आपकी जो बुरी आदतें हैं वो सबसे पहले तुरंत नष्ट हो जाएंगी। So the reason this happens is because we understand more and more our relationship with Krishna. तो बुरी आदतें इसलिए जाती हैं क्योंकि हम अपने जैसे जैसे भगवान के संबंध को जानना आरंभ करते हैं और समझते जाते हैं, उसके कारण जो हमारी बुरी आदतें जो है वो नष्ट हो जाती हैं। As we understand that Krishna is the supreme enjoyer, controller, and friend, and begin to rebuild that relationship, we will feel very satisfied. और जिस प्रकार जब हम देखते हैं कि समझते हैं कि भगवान जो है परम भोक्ता है, परम नियंता है और सबके सूरत मित्र हैं, तो इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके वास्तव में हम पाएंगे कि हम और संतुष्ट होते जा रहे हैं। केवल इस ज्ञान से ही संतुष्ट होते जा रहे हैं, इन आदतों से संतुष्टि जो है वो कम होती जा रही है। So we humbly request you all to try this science of bhakti yoga. इसीलिए हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस कृष्ण भक्ति का प्रयोग करके देखिए। And please read Bhagavad Gita as it is, and you will find your life start to make a lot more sense. तो आप भी भगवद गीता को पढ़ के देखिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन में जीवन का मतलब, जीवन जीने का जो अर्थ है वो आपको स्पष्ट होता जाएगा। So I will finish here. Thank you for your kind attention. Hare Krishna. जिसका भी प्रश्न है आप अपने हाथों पर रखिए। Hare Krishna, Prabhu. First of all, I would like to express my gratitude that your every words is especially promote forward wisdom's connection with God and have a relationship with Krishna. My question is, how can one attain the highest level of spirituality in the highly cultivated materialistic world so that the Maya can't affect us? Very nice question. Thank you. Yes. तो प्रभु जी का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि पहले तो प्रभु जी धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु जी को कि इतने अच्छे से भगवान के विषय में प्रभु जी ने समझाया। तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि किस प्रकार हम भक्ति के उस स्तर तक पहुंचे जहाँ पे माया के द्वारा जो है हम प्रलोभित ना हो। तो ऐसी जो है परम अवस्था को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? So we need to practice bhakti yoga with 3 qualities. तो उसके लिए हमें भक्ति योग का जो है अभ्यास करना पड़ेगा 3 गुण के साथ। Enthusiasm, उत्साह, patience, निश्चय and confidence. और कॉन्फिडेंस यानी धैर्य। If we practice bhakti yoga with these 3 qualities, then we will attain the highest goal. तो यदि आप भक्ति योग का प्रयास करते हैं इन 3 गुणों के साथ, तो आप भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त कर पाएंगे। But it must be accompanied by sadhu sangha. लेकिन ये तीनों का अभ्यास जो है साधु संघ के बीच में रहते हुए होना चाहिए। Because the real advancement we make is from the mercy of devotees. क्योंकि असली जो उन्नत अवस्था है वो हम भक्तों के कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। So surround yourself with devotees who are very serious about bhakti yoga and who have these 3 qualities. तो इसीलिए ऐसे भक्तों के बीच में आप रहिए भक्ति करने के लिए जो कि इन 3 गुणों को अपने जीवन में उतार चुके हैं और भक्ति इस 3 गुणों के आधार पर कर रहे हैं। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Dhanyavad. Pranam Prabhuji, Radhe Radhe. Hare Krishna. Just wanted to ask, yeah, first experiment you did in Bhakti Yoga, you can share. The first experiment I did in bhakti yoga, I can share. तो प्रभु जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि
प्रभु जी ने अपने भक्ति योग में जो है पहला जो एक्सपेरिमेंट, जैसे प्रभु जी कह रहे थे कि अभ्यास करके अपने जीवन में उतार के देखिए, तो प्रभु जी ने किस प्रकार भक्ति योग को अपने जीवन में उतारा। So I received Bhagavad Gita 2016, 2016 मैंने भगवद गीता को प्राप्त किया, and it didn't make sense. तो उस समय मुझे भगवद गीता ज्यादा समझ में नहीं आया, But after a few years of study, लेकिन कुछ साल बाद पढ़ते पढ़ते it was making a little more sense. थोड़ा थोड़ा समझ में आया, And I decided to move into an ashram for 1 month. और फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं जो है फुल टाइम आश्रम में 1 महीने के लिए जाऊंगा। So this was in the US. ये यूएस की बात है, And after 1 month of trying, और 1 then, महीने प्रयोग करने के बाद then I realized that the philosophy makes sense. मैंने ये पाया कि जो तथ्य है, जो इसका जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल ही सेंस है, मतलब समझ में आ रहा है। The chanting is joyful, चैंटिंग में बहुत मजा मजा आता है, बात सच है, and the food is really good. और फूड है, आहार वो बहुत बढ़िया है। Hare Krishna. तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने सुन रखा है कि कृष्ण है वो विष्णु के अवतार है, और जैसा कि प्रभु जी बता रहे हैं कि जो विष्णु जी है वो कृष्ण जी के अवतार है, तो क्या सही है क्या? Maybe you understood. He's saying that we have understood that Vishnu is. The source of You Krishna. told that Vishnu is Krishna's expansion. Yes. But we have heard in our tradition that Yes. it's the other way around. Yes. So what is it? Yes. Dhanyavad. So the avatars of Krishna, they come through Kshirodakashayi Vishnu, who is Paramatma. तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वो क्षीरोदाक्षाय विष्णु के माध्यम से इस संसार में प्रवेश करते हैं, But Krishna is still Swayam Bhagavan. लेकिन कृष्ण हमेशा स्वयं भगवान ही रहते हैं। He is so unlimited that he's able to come however he likes. और कृष्ण जो है इतने स्वतंत्र हैं कि वो अपना किसी भी रूप से जो है वो प्रकट हो सकते हैं। As Varaha avatar, he comes out of the nose of Lord Brahma. वो वराह के रूप में जो है ब्रह्मा जी के नासिका से भी प्रकट हो सकते हैं। So Krishna can come however he likes. इसलिए कृष्ण किसी भी प्रकार से अवतार ले सकते हैं। And the Shastra says very clearly that Krishna's tu Bhagavan Swayam. और शास्त्रों में वास्तव में ये बात बताई गई है कि सारे अवतारों में कृष्ण जो है वो मूल भगवान है। I hope this helps. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. As you said that whenever we feel low and whenever we feel that we are facing difficulties in our life, so we have to recall our relationship with the Supreme Lord. But at that time we forget how to recall that we have a relationship with the Supreme Lord. This is the first question. And the second question is, I'm reading Bhagavad Gita, but sometimes I feel that some verses doesn't make sense to me, and I need someone to make it easy for me. So what I should do at that point of time? तो प्रभु जी का जो प्रश्न है वो ये है, हाँ, तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो फिर हमें जो है भगवान के साथ हमारे संबंध को हमें याद करना चाहिए, और फिर हम पाएंगे कि समस्याओं से हम मुक्त हो रहे हैं। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं तो फिर भगवान का स्मरण बहुत कम ही होता है, तो कैसे हम उस स्मरण को बनाए रख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये पूछते हैं कि भगवद गीता मैं भी पढ़ता हूँ और कई सारे श्लोक हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा ही कठिन महसूस होता है, तो कैसे मैं हेल्प लूँ और कैसे मैं उन श्लोकों को जो है आसान रूप से समझ सकूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। So both questions can be answered with one thing. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर से हो सकता है। Studying Bhagavad Gita with those who know Bhagavad Gita. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि उन भगवद गीता पढ़ो, लेकिन उन लोगों के साथ पढ़ो जो भगवद गीता पढ़ते हैं। They can help remind you of your relationship with Krishna, and they will explain through Bhagavad Gita how you have that relationship. तो वो लोग जो हैं वो बताएंगे कि आपका भगवान के साथ क्या संबंध है, और साथ ही वो ये भी क्लियर करेंगे कि भगवद गीता के श्लोक को कैसे समझा जाना चाहिए।
also by chanting Maha Mantra. और साथ ही साथ जब आप जब भी करेंगे तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। Anytime, any place, chanting Maha Mantra will reconnect us immediately with Krishna. तो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर यदि हम जप करते हैं तो हम तुरंत भगवान के संसर्ग में आ जाते हैं, Because Krishna is his name. क्योंकि कृष्ण ही वास्तव में उनका नाम ही कृष्ण है। So please try this and see how इस it goes. प्रकार आप प्रयास कीजिए। Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. My question is how to control all your anger because I am do some mistake. So actually when I do some mistake, after mistake my parents said me some thought, then I am immediately anger. So can you tell me tips? तो प्रभु जी कह रहे हैं कि आ, मैं कभी कभी गलतियां करता हूं तो फिर मम्मी पापा मुझे डांटते हैं तो उससे मुझे बहुत क्रोध आता है, तो किस प्रकार मैं इस क्रोध को कंट्रोल कर सकता हूं। What I try to do तो मैं जो प्रयोग करता हूं वो बताऊंगा। is to take shelter of chanting. तो मैं जो हम करते हैं वो है ये कि हम हरिनाम का शरण लेते हैं। So rather than say something out of anger or do something out of anger, तो कुछ उस क्रोध के वशीभूत होकर कुछ करने से पहले या फिर बोलने से पहले take some space, take some time, तो कुछ अपना किसी अलग जगह पे चले जाइए और कुछ समय जो है अपने आप के लिए बिताइए chant, और उस समय पे आप जप कीजिए and when you are more calm, then you can do something and say something. जब आप महसूस करेंगे कि आपका क्रोध थोड़ा सा कम हो गया है तब वापस आकर के आप जो है अपनी बुद्धि के साथ कुछ कार्य कर सकते हैं, Because anger is like fire, it's very dangerous. क्योंकि क्रोध के साथ कुछ कार्य करना वो बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि क्रोध एक अग्नि के समान है और अग्नि के साथ खेलना घातक हो सकता है। So chanting will calm down the fire, and when the fire is calm, then you can, with a sane, peaceful mind, do the right thing. तो जो चैंटिंग है वो पानी के समान है जो कि उस क्रोध की अग्नि को बुझा देगा, और फिर उसके बाद अगर आप कुछ कार्य करते हैं तो आप सही मनोवृत्ति के साथ कार्य करेंगे। But also, if there are serious, recurring problems, it's good to talk with someone you trust and get some help. और यदि आपकी समस्या बहुत ज़्यादा अधिक है तो फिर आपको कुछ हेल्प भी लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए अपने सहयोगी लोगों के साथ। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna. प्रभु जी आपके चेहरे पे ना निखार कैसे है ये पूछना है। It's a spray. That's the question. Okay. Well, as I explained in this presentation, the more I understand my relationship with Krishna, the more my heart sings with happiness. तो जितना हम वही चीज जो प्रभु जी ने लेक्चर में बताया कि जितना हम भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा स्थापित करेंगे, जान लेंगे, उतना हम प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। And this kirtan, which we are going to do in just a minute, is the most pleasurable thing in all of the universe. और ये जो कीर्तन है जो कि अभी हम करने वाले हैं, ये वास्तव में सबसे सुख प्रदान करने वाला कार्य है जो कि पूरे संसार में किया जा सकता है। पूरे संसार में जो सबसे सुखमय कार्य है वो कीर्तन। So you become like a gulab jamun swimming in sweet syrup if you do kirtan every day. यदि आप कीर्तन से घिरे रहते हैं तो आप एक गुलाब जामुन के समान हैं जो कि चाशनी में तैर रहा है। And so I've just been doing this a short time, but it has transformed me immensely. So what to speak of somebody who has been practicing for many decades? तो इसीलिए मैं तो कुछ ही समय तक इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसका वो कर रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का तो क्या ही कहना जो काफी समय से, जो हम लोग भारतवर्ष में तो काफी समय से जो कीर्तन अभ्यास कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या कहना। Hare Krishna. Radhe Radhe Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. So thank you Guruji for giving me chance to speak in front of you. So Guruji, my question is how to remove bad habits. Sometimes I get off from my brahmacharya path
and in 1 to 2 weeks, I generally get off from a brahmacharya part and do some bad activity. So I want some answer regarding that. Yes, this is very practical. तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो है हम ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार जो है ब्रह्मचर्य की लाइफ से ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो क्या करें कि हम जो है ब्रह्मचर्य का जीवन भी एक स्टूडेंट लाइफ में पालन कर सकें। Association is the answer. तो प्रभु जी कह रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा है आपने, और इसका उत्तर ये है कि आप अपने संग से जो है संग आपका ये इस प्रश्न का उत्तर है। It's impossible to be a brahmachari in Delhi alone. अकेले रहकर भी इस दिल्ली प्रदेश में ब्रह्मचारी बन पाना असंभव है। Actually, anywhere it's impossible to be a brahmachari alone. वास्तव में किसी भी जगह पे ब्रह्मचारी अकेले रहना संभव नहीं है। So we need support, strength. तो इसीलिए हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। Just like one twig you can snap very easily, but a bundle of sticks you can't break. जिस प्रकार एक लकड़ी को आप तुरंत तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लकड़ी की एक गठरी हो तो उसको आप नहीं तोड़ पाएंगे। So as much as you can, every day try to surround yourself with those who are also serious about practicing bhakti yoga. इसीलिए ऐसे लोगों से अपने आप को घेर के रखिए जो कि आपके ही समान सीरियस हैं, सिंसियर हैं और जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे भक्तों से अपने आप को घेरना पड़ेगा। There's so many programs here, so many wonderful brahmacharis here, so please come here as much as you can. And if you can't come, try to find online sangha to fill in the gaps. बहुत सारे भक्त हैं मंदिर में, आप उनका संग कर सकते हैं, और साथ ही यदि आपको अगर संग नहीं प्राप्त हो रहा है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप संग को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के प्रवचन ऑनलाइन भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare First Krishna. of all, a lot of thanks to you for inspiring groups like us to follow the path of Bhakti Gita. So, like, my question is that you are telling that Krishna is the Almighty God. So, can we use this to conclude that the God who had made Adam and Eve, the God who had sent Jesus Christ as a messenger, about which the Bible tells us, or the Almighty Allah, about which Quran tells us, is nothing but Krishna and Krishna alone? Yes. Okay, so प्रभु जी ने ये पूछा प्रश्न कि आप कह रहे हैं कि भगवान जो ऑलमाइटी है यानी सुप्रीम है, तो क्या इसका ये मतलब है कि जो बाइबल में जो है जीसस क्राइस्ट का वर्णन आ रहा है, वहाँ पे जिस भगवान की बात की जा रही है, और जो ईसाई जो मुस्लिम धर्म में जो है जो अल्लाह की बात की जा रही है, क्या वो सब कुछ भगवान कृष्ण ही है? तो प्रभु जी कह रहे हैं God has unlimited names. तो भगवान के अनगिनत नाम हैं। Allah, Jehovah, Krishna, Rama. But the original is Krishna. तो ये कई सारे नाम हैं, लेकिन जो ओरिजिनल नाम है वो है कृष्ण। Just like one lamp which is used to light many other lamps. They're all equally powerful, but there's one original lamp. तो जिस प्रकार अगर बहुत सारी बत्तियां जल रही हैं तो सभी समान रूप से जो है प्रकाशमान दिखती हैं, लेकिन वास्तव में उन सारों में से एक जो है वो मूल बत्ती होती है जो कि बाकी सबको जलाती है। So Krishna is the original. तो इसलिए जो मूल बत्ती है वो कृष्ण है। Hare Krishna. तो इसलिए अब हम कीर्तन करेंगे, तो कीर्तन के लिए आप क्या हो जाए, कीर्तन से जस्ट पहले मैं इसका कुछ नोट तो इसलिए अब आपके साथ जो है सामने एक क्विज होगा, जब तक लोग जो है थोड़ा सा कीर्तन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो ये क्विज है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोर्स जो कि आपने पिछले महीने किया था। इसमें 4 सेशन थे, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट और गोल सेटिंग। तो ये जो 4 सेशन के ऊपर हमने जो है 2024 की आपकी प्रिपरेशन कराई थी। तो कई सारे भक्त उनमें से यहाँ पे बैठे हैं, तो हम आपका एक क्विज करना चाहते हैं और क्विज के आधार पर आपको प्राइज भी दिया जाएगा। तो आपको करना है ये, यहाँ पर ये जो बार कोड दिख रहा है आपको साइड देखिए, इसको जल्दी से स्कैन करना है। अपना फोन खोल लीजिए और
इस बारकोड को स्कैन कीजिए और इसमें एक छोटा सा क्विज है, उसको जल्दी भर के आपको सबमिट करना है। आपका टाइम है 120 सेकंड्स। Save it and